is. So that's why I say it is a Shrestha Bharat. So this is not a discussion. This is not, in fact, information passing session. यहाँ पे हम सब बात करेंगे, आप भी बताएंगे अपने व्यू पॉइंट्स, और हम सब इस बात को और ज्यादा इम्बाइब करेंगे अपने अंदर कि हाँ, हमारा भारत एक भारत है, हाँ, हमारा भारत श्रेष्ठ भारत है. So let me understand from few of you, what do you think of our country? Why our country is great? Few pointers from you, 1 or 2 points from each one of you. We are very few people present today. मुझे लगता है लोगों ने आज स्वतंत्रता की क्या बोलते हैं, अच्छी खासी यूटिलाइजेशन कर ली है, और सब लोग आज स्वतंत्र हो गए हैं, क्लब के लोग भी, और बहुत ही कम मेंबर्स आज प्रेजेंट है हमारी इस मीटिंग में. Very few people are there because they are exercising their power of independence today. So that is good in one sense, but if there could have been more people, we could have enjoyed more. लेकिन फिर भी हम बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे, और अपने भारतीयता को, अपने भारतीय होने के संदेश को, अपने भारतीय होने के पहचान को और भी मजबूत करेंगे हम आज. तो आइए जानते हैं आप सबसे, why India is great? What do you feel? टोस्ट मास्टर यास्मीन, क्या महसूस करती हैं आप अपनी भारतीयता के बारे में, अपने इंडिपेंडेंस के बारे में? थैंक यू टोस्ट मास्टर विकास, आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का. अगर मैं अपने बचपन में जाऊं तो मुझे कोई त्योहार उतना याद नहीं रहता जितना स्वतंत्रता दिवस याद रहता है. जब भी हम स्कूल जाया करते थे, हम अपनी गार्डन से फूल लेकर जाते थे, झंडा फहराया जाता था और आजादी के गाने और बाकी कई गाने बजते रहते थे. उस दिन तो इतना जोश रहता था कि सरहद पे जाके मर मिटने का मन करता था. तो 15 अगस्त का वो दिन है जब हम सब बड़े खुश रहते थे स्कूल जाने के लिए, वो लोग भी जो स्कूल नहीं आना चाहते थे. मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जितना रिच कल्चर हमारे देश का है उतना शायद ही कहीं होगा. बहुत से लोगों ने कहा है, मैंने बहुत से धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है और बहुत ज्यादा लोगों से सुना है कि जो लोग कभी भारत नहीं आए वो भी कहते थे कि हिंद से मुझे एक अपनेपन की खुशबू आती है. तो हिंदुस्तान एक इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पर मुझे लगता है जो भी आएगा यहाँ रच बस जाने का उसका मन करेगा. जैसे कि मैं आपको एक साधारण सी बात कहती हूँ. मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, पर मैंने छत्तीसगढ़ में अपनी पढ़ाई करी है. फिर मैं गुजरात आई. गुजरात मेरे लिए बिल्कुल नया था. मुझे गुजराती नहीं आती. मुझे यहाँ के आर्किटेक्चर बड़े पसंद आए, यहाँ की खान पान, भाषा, बोली बड़ी पसंद आई मुझे. मैंने सिर्फ गुजरात टीवी में देखा था या कुछ गुजराती दोस्तों से समझा था. पर मेरा यहाँ होना मुझे अपनेपन का एहसास सिर्फ इस वजह से दिलाता है क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ. तो मैं ये मानती हूँ कि हम सब इस देश के सामने बहुत छोटे हैं. मैं गर्व करने के लिए बहुत छोटी हूँ. मेरे देश पे मुझे बहुत गर्व है, पर मैं इस देश के सामने बहुत छोटी हूँ कि मैं इसकी तारीफ में कुछ कह पाऊँ. कुछ कर गुजरने का दिल है. अगर हम छोटी से छोटी चीज एक दूसरे के लिए भी करते हैं तो वो हम इस देश के लिए करते हैं. धन्यवाद. बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें कही आपने यास्मीन, और ये सेम फीलिंग ऐसा ही मुझे लगता है कि हम सब महसूस करते हैं अपने अंदर, और यही महसूस करने की और यही जो बात है ये हम सबको अपने देश से जोड़े रखने में हमारी मदद करती है, और यही वो चीज है जो हमें हमेशा सतत आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है. आइए जानते हैं भरत जी से, वो क्या सोचते हैं हमारे देश के बारे में, कैसे हमारा देश अन्य देशों से श्रेष्ठ है, क्या सोचते हैं आप टोस्ट मास्टर भरत? थैंक यू टोस्ट मास्टर विकास ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. कि मुझे मुझे पता है, हमें सब पता है कि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इसने बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सब कुछ झेला है और ये सरवाइव कर गई है. टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो हम आज भी जब पंचांग देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उन लोगों ने उस टाइम पे सब कुछ रियलाइज कर लिया कि किस तरह से धरती है, किस तरह से क्या है. ये कोई और देश ने ऐसा कभी नहीं किया था. सो ये जो बात है अपने देश की, जो इतना रिच कल्चर, जितनी रिच अंडरस्टैंडिंग, जितनी रिच टेक्नोलॉजी से हम लोग निकले हैं और जितना हमने सरवाइव किया है इन सबको, ये हमें एक एक्सेप्शनल देश बनाता है. तो मेरा व्यू यही है इस देश के बारे में, अपने देश के बारे में, कि ये बहुत ही बढ़िया कंट्री है टू लिव, टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पे कोई रोक टोक ना कभी थी ना कभी है और शायद कभी रहेगी भी नहीं. इसलिए हमें ये डेमोक्रेसी जो एंजॉय कर रहे हैं, जिस लेवल की डेमोक्रेसी, जिस क्वांटिटी में, जिस हम लोग जितने लोग पॉपुलेशन में लोग हैं हम लोग,
इतनी सारी भाषाएं बोली जा रही है, इतने सारे मजहब है, रिलीजन्स है, इतने सारी लैंग्वेजेस, इतने तरह का खान पान, इतनी डिफरेंसेस के बावजूद हम एक हैं, तो दिस मेक्स आवर कंट्री अ वेरी स्पेशल कंट्री। सो मुझे नहीं लगता कि कहीं और देशों में यही चीज हमें देखने मिलेगी। दैट्स मेक आवर कंट्री अ स्पेशल कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही आपने टोस्ट मास्टर भरत, ये बिल्कुल सही है। और दैट मेक्स आवर कंट्री अ स्पेशल कंट्री। मैं आप सबसे बात करूंगा, अपनी भावनाओं को रखूंगा, और हम सब अपने इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह को, सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे से मनाएंगे। मैं आपके साथ कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। शुरुआत करता हूँ एक सबसे पहले एक यूनिक फैक्ट से। मुझे लगता है यहाँ पे उपस्थित सब लोगों को ये पता है कि वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स, 200 इयर्स। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में आई और उन्होंने लगभग 100 सालों तक 1857 तक, 1757 से 1857 तक उन्होंने हमारा दोहन किया। और उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है वो हमें कंट्रोल कर रही थी। वी वर अंडर दी कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली। सो ऑलमोस्ट 200 इयर्स तक इन्होंने हमारा दोहन किया, शोषण किया, और फिर वहां से हम आगे निकल के आए। अगर आप से कोई बताना चाहेगा कि आजादी की पहली लड़ाई, द फर्स्ट मूवमेंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड एंड व्हेन, कब शुरू हुई थी? अजीज, आपको याद है सबसे पहले आजादी की मूवमेंट कहां से शुरू हुई थी, और किन लोग, कौन से लोग थे जिन्होंने वो शुरू किया था? Uh, Actually, I can't recall. ओके, Uh, नो प्रॉब्लम, नो Sorry, I can't recall. नो प्रॉब्लम, आई हेल्प यू रिकॉल। सो सबसे पहले 1857 में सिपाही म्यूटनी के नाम से, सिपाही विद्रोह के नाम से, जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी थी वो, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहब वगैरह लोग थे, जिन्होंने पहली बार ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट जाके 1857 में अपना रेजिस्टेंस दिखाया, अपना विद्रोह दिखाया। और वहां से हमारी फ्रीडम का स्ट्रगल जो है शुरू हुआ, जो बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर आई स्वदेशी मूवमेंट की बात 1900 में, जब बाल गंगाधर तिलक जी ने, जे.आर.डी. टाटा ने, इन लोगों ने मिलकर बॉम्बे में स्वदेशी स्टोर्स बनाया था, जहां पे कि वो इंडियन मेड, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और बेचते थे, और बोलते थे कि इसको ही यूज करना है। जो बाद में महात्मा गांधी ने भी इसको सोल बताया कि दैट इज द सोल ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल। स्वदेशी अगर हमको बनना है तो हमें सबसे पहले स्वदेशी वस्तुएं यूज करनी शुरू करनी होगी। तो वहां से जाके हमारा 1900 में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ये स्टार्टिंग के कुछ दौर थे आजादी के, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई बात। फिर आया, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। आपको अगस्त 7, 1906 को अपना जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा जिसे हम कहते हैं, वो पहली बार जो है होस्ट किया गया था पारसी बगान स्क्वायर कोलकाता में। और जो पहला वेरिएंट था उसका, उसको डिजाइन करने वाले का नाम किसी को पता है? किन्होंने डिजाइन किया था अपना फर्स्ट ट्राई कलर? उनका नाम था पिंगली वेंकैया। उन्होंने 1921 में फर्स्ट टाइम अपना ट्राई कलर डिजाइन किया था। जो अभी करंट ट्राई कलर हम देखते हैं, जो सैफरॉन, व्हाइट और ग्रीन कलर का स्ट्राइप्स का है, इसमें 24 स्पोक्स ऑफ अशोक चक्रास हैं, वो भी ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था जुलाई 22, 1947 को, और फिर उसको होस्ट किया गया अगस्त 15, 1947 को, ठीक 75 इयर्स पहले। सो जब हमने आजादी पाई थी। तो ये है हमारा हमारा इतिहास। दिस इज आवर हिस्ट्री, हाउ आवर नेशनल फ्लैग started getting adopted and all. So we are in the Toastmasters meeting, and in the interest of time I will not keep it long. मैं और भी बात करूंगा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, but as you all know, in any Toastmasters meeting we will have 3 different segments. A segment of prepared speeches, then we will have table topic session जहाँ पे हमारे गेस्ट भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और there will be at the end there will be evaluation session, जिसे हम कहते हैं breakfast of champions. So today we will have all 3 segments as well, while we are discussing our story of independence, our freedom struggle, interesting facts about our independence, about our country, how our country is great. ये सब बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में हम टोस्ट मास्टर की यूजुअल मीटिंग को भी एंजॉय करेंगे। सो मीटिंग का पहला सेगमेंट होता है प्रीपेयर्ड स्पीच का। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आज के जनरल इवैल्यूएटर को बुलाना चाहूंगा। सो इन एनी मीटिंग वी विल हैव अ जनरल इवैल्यूएटर हु विल इवैल्यूएट द मीटिंग इन जनरल। सो लेट मी इनवाइट
द जनरल इवैल्यूएटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य समीक्षक ऑफ द मीटिंग। सो हु इज दैट? हमारे आज की सभा के मुख्य समीक्षक हैं टोस्ट मास्टर विक्रांत, जो कि हमारे क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ साथ में वो एक ज्वेलर हैं, वो एक इंजीनियर हैं, वो एक एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफर हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और हमारे क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। विक्रांत जी, आपका स्वागत है एज मुख्य भाषा समीक्षक जनरल इवैल्यूएटर के तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर विकास, मुख्य सभा महोदय। आज मेरा रोल है मुख्य मूल्यांकनकर्ता या जनरल इवैल्यूएटर भी बोलते हैं। मतलब मेरा रोल है शुरुआत से लेके अंत तक, सभा कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, और सभी रोल प्लेयर ने कैसे अपने रोल को निभाए, कैसे अपने रोल को पूरा जस्टिस किया, कैसे वक्ता ने अपना भाषण दिया, कैसे मूल्यांकनकर्ता ने उसका मूल्यांकन किया, कैसे उन्होंने अपना व्याकरण या तो फिर अपने उनका भाषण सही में था, मतलब फ्लुएंट था, या तो फिर उन्होंने कुछ उनके रुकाव था, कुछ ज्यादा उन्होंने कुछ शब्द फिलर्स यूज किए थे, और कितना समय लिया। तो ये सब काम का मुझे मूल्यांकन करना है, उनके ऊपर नोट बनानी है। लेकिन ये इतना बड़ा काम मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास 3 सभ्यों की एक टीम है। वो है टाइमर, काउंटर और ग्रेविनियन। टाइमर मतलब समय संयोजक, गणना विशेषज्ञ और व्याकरणकर्ता। तो आज के समय संयोजक खुद मैं ही हूँ। तो मैं कुछ समय टाइमर के कुछ नियम जो टोस्ट मास्टर की सभा में होते हैं, वो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो तैयार भाषण में पहले बात करें तो अवधि होती है 5 से 7 मिनट, और जब वक्ता अपना 5 मिनट का भाषण करे तब मैं उनको हरा कार्ड दिखाऊंगा। जब वक्ता अपना भाषण का 6 मिनट पूरे करेंगे तब मैं पीला कार्ड दिखाऊंगा, और 7वें मिनट पे वो होता है लाल सिग्नल, मतलब अब अपना भाषण पूरा करने का वक्त आ गया है, और ये 7 मिनट के अतिरिक्त 30 सेकंड उनको मिलते हैं कि अपना भाषण संपूर्ण करें। और दूसरा जो सेशन है वो है त्वरित भाषण, मतलब टेबल टॉपिक बोलते हैं। तो वहां पे अवधि होती है 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक। तो 1 मिनट के ऊपर मैं हरा कार्ड दिखाऊंगा, 1 मिनट और 30 सेकंड में मैं पीला कार्ड दिखाऊंगा, और 2 मिनट में मैं लाल कार्ड दिखाऊंगा। और वहां भी 30 सेकंड का अतिरिक्त ज्यादा और माइनस, मतलब वो भाषण करता है अपना भाषण को कम से कम 30 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 30 सेकंड तक बोल सकते हैं। और सबसे अंत में आता है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन, और वहां पे हर चीज का मूल्यांकन होगा। तो जो मूल्यांकन करता होंगे उनके लिए भी समय है। तो उनको जैसे भाषण के मूल्यांकन करता है, उनकी समय अवधि है 2 से मिनट 3 मिनट तक। तो 2 मिनट पे मैं हरा कार्ड दिखाऊंगा, और 2 मिनट 30 सेकंड में मैं पीला कार्ड दिखाऊंगा, और 3 मिनट में मैं लाल कार्ड दिखाऊंगा। और वहां भी 30 सेकंड का अतिरिक्त समय आपको मिलेगा। बाकी और सभी रोल प्लेयर्स के भी मैं समय नोट करता रहूंगा, और अंत में जब भी मुख्य मूल्यांकन करता हूँ, जब मैं अपने आप को बुलाऊंगा, तब मेरा पूरा रिपोर्ट लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो यस, नाउ अभी समय है गणना विशेषज्ञ को बुलाने का। तो आज की गणना विशेषज्ञ कौन है? आज की गणना विशेषज्ञ है टोस्ट मास्टर यास्मीन। वो एक शी इज अ मदर, एंड उन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है, और लेक्चरर है, और अपने आप को एक अलग तरीके के स्त्री के स्वरूप में दिखना चाहती है। वो अपना खुद का एक स्वप्न है। तो तालियों के गड़गड़ाहट से
अगणना विशेषज्ञ टोस्टमास्टर यास्मीन को मैं बुलाता हूँ। ओवर टू यू टोस्टमास्टर यास्मीन। Thank you, Toastmaster Vikrant. So today I am the counter of the meeting. अब मेरा कार्य क्या है, आप अगर अपनी स्पीच देंगे या कोई भी कथन कहेंगे, उसके बीच में जितनी बार आपने या फिर पॉज लिया है, शॉर्ट पॉज या लॉन्ग पॉज, मैं उसकी गणना करूंगी और अंत में मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्टमास्टर यास्मीन। अभी आता है आज हमारे व्याकरण विशेषज्ञ। व्याकरण विशेषज्ञ कौन है? व्याकरण विशेषज्ञ है हमारे यूनिट हेड सिम्स हॉस्पिटल में वो काम करते हैं। वो MBA फाइनेंस है, ICW है, MSW है, MCOM भी है और अभी वो साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। तालियों के साथ गड़गड़ाहट से हमारे व्याकरण विशेषज्ञ टोस्टमास्टर अजीज का स्वागत करें। ओवर टू यू। Thank you, Toastmaster Vikrant, for a wonderful introduction. ग्रामेरियन का रोल है जो भी अच्छा यूसेज, नॉट सो गुड यूसेज नोट करना और उसको प्रेजेंट करना मीटिंग के एंड में, और वर्ड ऑफ द डे एंड फ्रेज ऑफ द डे इंट्रोड्यूस करना, ये सब ग्रामेरियन का रोल है। तो हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे है बोम्बिलिशियस। बोम्बिलिशियस, इसका मीनिंग है समवन और समथिंग इज अमेजिंग, अमेजिंग। तो मैं बोम्बिलिशियस का स्पेलिंग बताता हूँ। BOMBILICIOUS, बोम्बिलिशियस, BOMBILICIOUS, बोम्बिलिशियस। So we have many bombelicious leaders like Vikash, Vikrant, Kushal in our Toastmasters club. We can give example like this. So, and the phrase of the day is in the soup, in the soup. So उसका मीनिंग यही है, हम लोग ट्रबल में हैं, वी आर इन ट्रबल, इन द सूप का मीनिंग। उसका एग्जाम्पल ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इफ वी डोंट डू द असाइनमेंट्स इन टाइम, वी आर इन द सूप, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। तो मेरा रिपोर्ट मीटिंग का एंड में प्रेजेंट करेंगे जब जनरल इवैल्यूएटर मुझे बुलाएगा तब। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट है, वर्ड ऑफ द डे बोम्बिलिशियस एंड फ्रेज ऑफ द डे इन द सूप यूज करिए आप लोग। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू जनरल इवैल्यूएटर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो वर्ड ऑफ द डे और फ्रेज ऑफ द डे को आप चैट बॉक्स में भी डालिए। और मैं अभी ये मेरा मंच मुख्य सभा महोदय टोस्टमास्टर विकास को वापस करता हूं। ओवर टू यू। Thank you so much, Toastmaster Vikrant, for giving the virtual stage back to me. So once again, welcome everyone. We are talking about One India, Best India, एक भारत श्रेष्ठ भारत। So आगे बढ़ते हुए जैसे ही हम अभी प्रीपेड स्पीच के सेक्शन में जाएंगे, तैयार की हुई जो भाषण है उसको हम सुनेंगे। उसके पहले मैं एक दो लोगों से और जानना चाहूंगा कि कैसे हमारा इंडिया बेस्ट इंडिया है और वन इंडिया है। सो लेट मी हियर फ्रॉम वन ऑफ द गेस्ट। प्रणव जी, क्या आप बता पाएंगे व्हाई आर इंडिया इज बेस्ट? व्हाई डू यू लाइक द कंट्री? व्हाई इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू लीव, और व्हाई इंडिया इज वन इंडिया इन द बेस्ट इंडिया? एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे है, आपके विचार प्रणव जी? क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? टोस्टमास्टर प्रणव, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, so let me ask. Yes. Yes, Pranav sir, I was asking, what do you feel about our country? Why our country is the best country? हम क्यों अपने भारत को कहेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत? Anything from you, sir? Thank you, Vikas, Mr. Vikas. So I think when you travel abroad, when you go abroad,
I think when you live abroad, you feel that you know what you lack of. मतलब अपने जो कमियां अपना देश के लिए जो है आपको समझ में आता है। एंड एक चीज मैंने जो देखा महसूस किया है कि इंडिया का जो अपनापन है, इंडियननेस है, इवन काफी सारा नेशनलिटी के साथ मैंने काम किया है। I think they try to learn, they try to copy our culture. Even मेरे साथ when I was in Saudi Arabia, काफी मैंने काफी लोगों को उस टाइम पे रिक्रूट किया था लोकल। तो then I left, but still I get a call from them, you know. And when they call me, when they talk to me in Hindi. I was surprised, you know. So they also टूटी फूटी हिंदी बोलता है वो लोग, लेकिन they try to express their feeling in हिंदी। तो मेरे को बहुत गर्व होता है। मेरे को लगता है कि आज मैं करीबन 3 साल ऑलमोस्ट 2.5-3 years हो गया मैं वहाँ छोड़ के आया, फिर भी ये लोग they remember me, they call me and they talk to me in Hindi, they try to talk to me in Hindi. So and whenever I ask why you do that, he said हम लोग they also say that they are interacting, they are talk मतलब काफी other nationality के साथ वो लोग interact करते हैं, but वो जो बोलता है इंडिया का जो आदमी है, उनका जो richness है, उनका जो sweetness है, उनका जो feelings है, वो they don't find it in any other nationality. So that's the matter of great pride. And और एक चीज मैं कहूँगा, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी को एक किसी ने, आई थिंक मेक्सिको का प्राइम मिनिस्टर और somebody is asking him to be a part of this committee where this war welfare, जो युद्ध चल रहा है, इसको वो समझौता करे मोदी को, क्योंकि मोदी को चाहता है कि ही कम एंड ये चाइना, ताइवान और रूस और यूक्रेन, ये इनको रिप्रेजेंट करे, honorable Prime Minister Narendra Modi. So these are the things really makes you feel proud. I'll talk and talk endlessly, but these are the things I feel, when I go out abroad or उसका कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई भी देश बराबरी नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई वी आर एक भारत श्रेष्ठ भारत। वी आर रियली रिच in terms of our culture, in terms of our heritage, in terms of our language, diversity, unity, everything. So बहुत अच्छी बात कही आपने। और डेफिनेटली our prime minister is a charismatic leader, so उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। और जिस तरह से हमारे देश का नाम धीरे धीरे और विश्व पटल पर बढ़ता जा रहा है, हमें फिर से विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसी मेरी सोच है। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। Let's move ahead and begin the first part of a Toastmasters general meeting. That is a session where we talk about prepared speeches. So आज की सभा में जो पहला prepared speech है उसको मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा आपके सामने। So पहले मैं जो स्पीकर है उनको बुलाऊंगा। जो वक्ता है हमारी, उनका नाम है टोस्टमास्टर यास्मीन। टोस्टमास्टर यास्मीन आती हैं बनारस से। She is engineer by education, लेक्चरर बाय प्रोफेशन, और बहुत ही कुशल वक्ता हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, बहुत अच्छी स्पीचेस देती हैं। एंड शी इज हियर टू गिव वन ऑफ हर स्पीचेस बेस्ड ऑन द पाथवे, टोस्टमास्टर पे बेस्ड है जो कि, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए पहले मैं उनके इवैल्यूएटर यानी उनके समीक्षक जो होते हैं, स्पीच के भाषण समीक्षक बोलते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, जो कि हैं टोस्टमास्टर भरत।
सो टोस्ट मास्टर यास्मीन की इनोवेटिव प्लानिंग लेवल 1 स्पीच 3 का ऑब्जेक्टिव बताएं टोस्ट मास्टर भरत। Good afternoon once again. Toastmaster Yasmin is doing innovative planning in his pathway. Her level is level 1 and speech is number 3. Title is Liberal Arts in Times of Social Media. Surely टोस्टमास्टर भरत। Toastmaster, yes. धन्यवाद भरत, टोस्टमास्टर भरत आपका। तो टोस्टमास्टर यास्मीन, liberal arts in times of social media, liberal arts in times of social media, टोस्टमास्टर यास्मीन, स्टेज आपका है। You are muted. Okay. Am I audible now? Yeah. The rise of social media and its presence is very obvious. But in the light of it, learning has been pushed into darkness. Liberal arts being the best example of how it has taken a backseat. What is liberal arts? It is a curriculum aimed at imparting general knowledge and developing general intellectual capacities in contrast to any vocational curriculum or technical curriculum. It includes humanities and social sciences and other educational disciplines such as history, political science, economics, international relations, and so on. Think of the world without history. Think of the world without any civilization or culture or any account of it. Think of a world without books or music. This is what liberal arts has given to the world. It has given all the sophists, the authors, the leaders, the speakers, the artists to the world. But how is social media hampering it? The problem lies in the fact that social media is no longer a mode of communication, but providing anything and everything to the naive user on the other end. The manner of acquisition of resources and knowledge without any proper filter and the overload of information results in being confused, increasing confusion among the students and other people on the end side of the screen. Hence, the main aid of global education or the main aid of the global social media is to provide technical knowledge, to raise technocrats, managers. But in the light of it, our liberal arts has somewhat being pushed back. How? In the top-down model, the state and the private parties are making liberal arts a subordinate by reducing its structure. How? Let me tell you. Now, English literature has become communicative English. History has become tourism. Psychology has become now counseling and clinical or medical psychology. So it is losing its purest form or its purity. Thus, though in COVID times, social media appeared to be very useful to students. It provided online resources to students, smart classrooms, thus enhanced learning. But I don't think it is really necessary for liberal arts to disappear in a vast what do we say to that, in a vast universe of resources which is not being filtered or not provided without any proper communication with the end user, without any filtering, without any purification, without any proper quality of material provided to the students. Hence, I should say that it is argued to be preferred choice and skill set for learners include in the choice-based credit system, but the situation today reflects the worldwide decline in the downsizing of humanities along with liberal arts and classical education. The challenge lies in the processing of information.
आज हमें जो भी सामान इंटरनेट पे मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है, पर उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ये एंड स्टूडेंट को नहीं पता। अगर आज मैं एक कोर्स लेना चाहूंगी इंटरनेट पे, तो मैं वो कोर्स लेने के लिए मुझे बहुत सारे रिसोर्सेस से जाना पड़ेगा, और हर रिसोर्स की सत्यता मुझे आज नहीं मालूम। We know very well that how people are being misled in the name of courses, in the name of education, and being provided false things, and thus declining the stature of the respect that particular course or that particular degree holds in an organization or in the world. Hence, I should say that the challenge lies in the processing and assessing of information in this compounded by weakening of liberal arts. In this era of junk, mostly blurry and glossed information, we should creatively harness the power of social media in the light of earlier wisdom. So, in the times of COVID, we all were very happy. The students were going through online classes. I should say that technical education was being imparted properly, but in terms of classical arts like music, dance, history, and all was not being provided properly, but in a filtered form. No purity was left for liberal arts in the market of online education. Hence, thus, for liberal arts to prevail and flourish as it used to be, it should retain its pure form and meaning. And for this, a proper regulation should be made by the authority who is governing social media to take it to the end user in its pure form. Thank you. Thank you so much, Toastmaster Yasmin, for such an insightful speech about the liberal art, how it is not getting presented in the purest form in the era of social media. So kudos to you, good speech, a lot of learning for all of us. Let's move on to the next speech. Toastmaster Vikrant, are you going to give a speech as well? I'm ready to give my speech. Don't worry. Okay, no problem. Then in that case, we will go ahead and hear your speech as well. So it's time to present you the second. Yes. But I think Toastmaster Ajit says no, Miss, because he is my speech editor. So I forward to you my. In that case, Toastmaster Yasmin is there. Can she evaluate your speech? She can. She is on level 1. Actually, I have level 2 S1. So she can, because she is completing. In that case, you give speech in the next meeting. I think that would be better, because there's no evaluator. There's no point to. Maybe Bharat can. Bharat is also giving. Maybe you can give if you want to take. I am finished. Okay, no problem. If you want to give a speech, the platform is all yours. So I'm forwarding you I'm forwarding you the text. You just read. Okay. So the second speaker for today's meeting is Toastmaster Vikrant, and I am going to evaluate his speech. So his speech is from the pathway called Leadership Development. He is giving level 2 speech 1, and objective is managing time. So observe his or her time management patterns. So title of the speech for Toastmaster Vikrant is Respect the Time and Time Will Respect You. Toastmaster Vikrant, respect the time and time will respect you. Respect the time and time will respect you, Toastmaster Vikrant. Timing is 5 to 7 minutes. All the very best, Toastmaster Vikrant. Okay, just hold on. I start the timer for myself. Okay. क्या आपको पता है ब्रिटिश हुकूमत जब इंडिया में भारत में थी तब हमारे यहाँ के लोग उनके बारे में क्या बोलते थे? वक्त ब्रिटिशरों की मोहताज है, नहीं कि ब्रिटिशर लोग वक्त की मोहताज। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब जानते हैं समय बलवान है, समय सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे मित्रों
क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य उसी समय आधी दुनिया पे राज कर रही थी, क्योंकि उनकी समय प्रबंधकता विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी और अनुशासकता भी। मतलब जिन लोगों में समय प्रबंधकता और अनुशासकता होती है वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट परिणाम ला सकते हैं। Very good afternoon, my dear fellow Toastmaster and guest. आज मैं today I will not talk about time management of my profession or my life or my social life, but today I will discuss about time management of any club level Toastmaster meeting. We all know we have 2 hours time limit for the entire session. And we know that our goal is to complete the entire meeting within 2 hours. So it is simple. We know if you divide your tasks, entire tasks into small tasks, and you predefine every task to a time limit, then and then you can achieve your desired goal within a time limit. In Toastmaster meeting, we have a different tasks. Sergeant Arm mission, presiding office address, Toastmaster of the day session, general evaluated report, table topic session, guest feedback, 6 to 7 type of tasks, and each task have also a time limit. And we have seen from last many meetings before this current tenure that we were actually exceeding the time limit, 20-25 minutes. Why? It is a good sign for our club members, but not to the guest audience, because they came by looking the time which is 4 to 6, and this club is going exceeding the time. My dear friend, members are enjoying their role. General evaluator is giving briefly report up to 12 minutes. Toastmaster of the day session sometimes go beyond the 20-25 minutes. It shows members' enthusiasm. It is good. And Sergeant at Arms sometimes have an inspiring speech. Presiding officer have sometimes inspiring speech, but it exceeds the time. So how to cut, how to reduce? And we all know time management method. Cut unnecessary things. Give priority to the works. And in this tenure, I found that that should not be inspiring speech in Sergeant at Arms and presiding officer. Sergeant at Arms will give only mission statement. Presiding officer will only give brief history and introduction of the guest, and at the end, feedback from the guest. Toastmaster of the day's session should not exceed 15 to 20 minutes, including his or her theme. And my dear friends, general evaluator's own report should not be exceed 5 minutes. And we have seen general evaluator is also evaluating speech. It is already evaluated by the speech evaluator. And after member reviews, some of member give me suggestion. Introduction of the member is necessary, but if the roles are repeating, then don't repeat the introduction. Just call them Toastmaster Vikram because it is already introduced the meeting. So it also cut the time, and from last 5 to 6 minutes, I work on that. And we are all managed to complete the meeting within a time limit 2 hours, 2 hours 5. It is okay. And my dear friends, this is not a time management to cut
sometimes we have exceed the time. If there is no one speech, we have a 10 to 20 minutes more. So in that time, we can have access stable topic, or in such this time, we have a more session, interactive session. Sometimes we can do a group discussion. Means management is to utilize entire time duration and complete the meeting within a time limit and make interactive with this meeting. And my dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, एक उत्तम वक्ता इसे भी बोलते हैं जो अपना भाषण सही समय पर समाप्त करता है। और मेरे क्लॉक में 6 मिनट और 30 सेकंड हो गई है और मैं भी अपना भाषण का अंत लाने की तैयारी में, मतलब शुरुआत, अंतराल और पूर्णाहुति। ये एक उत्तम वक्ता का लक्षण है कि अपना भाषण अपने समय की व्याप्ति के अंदर पूर्ण कर दे। सही बात है कि नहीं दोस्तों? So this is the call. If you respect the time, time will respect you. Over to you, Sabha Mahoday. Thank you so much, Toastmaster Vikrant, for his speech. It was really a good Time one, is 7 and 5. insightful, and a lot of Okay. learning from. Time is 7:05. Okay. Good. Thank you. बहुत धन्यवाद, So- आपने मुझे एक भाषण देने का मौका दिया। खूब खूब धन्यवाद। So this was the prepared speech section. Now we'll move on to the second part. Before that, I was talking about the theme: why our India is the best. Ek Bharat, Shresth Bharat. So in the discussions, I brought something very insightful for you. Some informations, interesting informations जो मैंने आपसे बात की, 4-5 बातें मैंने आपको बताई और एक दो चार बातें मैं आपको और बताऊंगा। जैसे कि do any one of you know that our official national anthem at the time of independence, we actually did not have anything ready. So the song which was called Bharato Bhagya Vidhata, which was composed in 1911 by our national poet Ravindranath Tagore, was renamed Jana Gana Mana, and it was then adopted by the Constituent Assembly of India as the national anthem on January 24, 1950. So starting में जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था, स्वतंत्रता के समय हमारे पास कोई भी नेशनल एंथम रेडी नहीं था और उस समय एक गीत हुआ करता था रविंद्रनाथ जी का, भारतो भाग्य विधाता, उसी को रीनेम करके फिर बाद में नेशनल एंथम के लिए अडॉप्ट किया गया। So that was one piece of information I wanted to bring to you. और ऐसी ही कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए I would also like to understand from Toastmaster Ajish that why do you feel the India is the best country? Why India is one nation, best nation? Ek Bharat, Shresth Bharat. Toastmaster Ajish. Okay, thank you, Toastmaster Vikash. Actually, I feel that most intelligent people in the world lives in India. Okay, so the reason is we are always focused on knowledge, education, and we are more connected to the people. Unlike other countries, we are very much socially connected. We share our knowledge, we share our education, we share our wisdom. So as a result, most malicious, intelligent people lives in India. That is a remarkable quality of India. And secondly, the population. India having 140 crores population. That is second after China. So 1 out of 6 of people we consider are from India. So that's the biggest advantage of India. So we have such a caliber of human. So we can see that only in China. Okay. So no country is near to us. China and India are the best in terms of population. So that is the biggest advantage of India. And second, I lived in 17 states of India.
So I can see the rich heritage and culture, the dance form, the art forms, the food, so that we cannot see anywhere. And the second about our natural scenes and all. So we have like Kashmir, we have Kerala, we have Gujarat. They are entirely different. We have like desert in Rajasthan. So everything is in India. So we don't need to look anywhere else. Everything we can see in India. So that is the specialty of India. And secondly, we Indians are very much emotional. We take care of the emotions of other people. In outside India, it is like mechanical life. They genuinely not care about others. But in India, we do care about our neighbors, our friends. Their problem, we have empathetic feeling, very much empathetic feeling. We feel with others. Okay, that we cannot see anywhere in the world. Only in India we can see. And our respect to elders, respect to teachers, Mata Pita, Guru, Dev. That concept we cannot see anywhere. That is the specialty of India. And secondly, Aditi Devo Bhava. We treat guests like God. So that also we cannot see anywhere. So that is our rich tradition culture. So that's why everybody is trying to be like Indian. Every other part of the world trying to be like Indian nowadays because of this kind of things. Great. That's it. Great. So bombilicious, wonderful, awesome, beautiful, great thoughts, Toastmaster. Good. Let's move on. And let's move on with the second part of a Toastmasters meeting. As you all know, in our second section, we conduct table topic session. So I would like to invite our table topic master for today's meeting. This role is also called in Hindi Twarit Bhashan conductor, Twarit Bhashan Sanyojan Karta. So the table topic master, who is that? Someone who has served our club as secretary in the last tenure, who is an entrepreneur by profession. He runs a business called uniformscart.com, and where he helps all the organizations to get dressed well. So let's welcome with big round of applause Toastmaster Bharat, our table topic master, Twarit Bhashan Sanyojan Karta for this meeting. Over to you. The virtual stage is all yours, Toastmaster Bharat. Good evening, Toastmasters and guests. Sorry, I was not able to recall the name in Hindi, so I will say I'm a table topic master today. Well, the purpose of the topic master is to facilitate table topics where guests and members will have the opportunity to practice their impromptu speaking. I will introduce a topic and call on speakers who will be given 2 minutes to speak on the subject. There is a time limit from 1 minute you are qualified till 2 minutes, and each topic will be given by me. So the purpose of this session is to improve the impromptu speech. जैसे कोई भी हमें अचानक माइक हाथ में दे दे और हमें कुछ कहना हो, तब हमें उस चीज के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है. यह इस पर्पस है टेबल टॉपिक मास्टर्स का. So anyone from the Toastmasters can start it. So I would like to start with Toastmaster Ajish, if he is ready to speak on. Okay, sure, I'm ready. One more thing to add, use the word bomblicious and in the soup in your 2 minutes. It would be a good one. Yes, Ajish. So choose any number. Yeah, definitely. Yeah, choose any number between 1 to 10. It is 6. It is 6. 6. Okay. It's a bit sensitive. So, sorry, I cannot on my video. Toastmaster Bharat, I cannot on my video. I'm sitting in my office. That's right. It would be good, but yeah, that's all right then. The topic number 6 is speak on tribute to our martyred soldiers. शहीद सोल्जरों के लिए आपको बोलना है. शहीद सोल्जरों के लिए मुझे बोलना है. हाँ, 2 मिनट. ओके. देखिए, हमारा सबसे इंडिया का सबसे स्पेशल लोग है, फिल्म स्टार्स नहीं है.
और पॉलिटिशियंस भी नहीं है। हमारे लिए सबसे स्पेशल लोग है, हमारे लिए सबसे स्पेशल लोग है जवान एंड किसान। किसान के कारण हम लोगों को खाना मिलता है, जवान हमारा रक्षा करता है, इसलिए हम लोग अच्छे तरह से सोचते हैं, हमारा राज्य का रक्षा करता है, हमारा हम दे आर मेकिंग अस सेफ द जवान। सो अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट रेस्पेक्टेड पीपल आर Jawan and Kisan. So we should always salute them. They are sacrificing their life for us. If they don't do that, we are in very much danger. We are in the soup. We are in the soup if they don't do their job. See, they don't mind their life. Even in any kind of danger, they are doing their duties properly, especially the Jawans. Okay. So I sincerely respect always. I salute whenever I see a Jawan in front of me, army person. I especially respect army people. Whenever I see any army man, I do salute them. So that's my respect to them. I treat them like goat. Okay, they are my first goat. Okay, that's it from my side. Thank you. Thank you, Toastmaster Ji, for such a great views on our soldiers, martyred soldiers and soldiers. Now I would request Toastmaster. Hello. Am I audible? Hello. Okay. Yes, you are audible. Yes, Pranav, would you like to try? Yes, Pranav Ghoshji, would you like to try for the table topic masters? Yes. Choose any one number between 1 to 10 except 6. 6 has been used by Ajit. Yes. 6. Except 6. 6 Okay. has been used. So from 1 to 10 except 6. 5. 5. Okay. It would be good for you and good for us as well. The topic is Indian economy, and your time limit is from 1 minute to 2 minutes. Indian economy, Pranav Ghosh, Indian economy. Topic is Indian economy. Yeah. Hello. Yes, timer please. So Yeah. So I mean, the economy is the health of a country. I mean, we have seen the economy of developed countries versus developing countries. I mean, we are still in the league of developing country. So, but India has a very bright future to be part of a developed countries. Now, if you see today, Indian GDP, the growth rate, the amount of growth engine, I would say it is producing, it is actually is a good sign. I know rather than other countries. But if I say that one thing I would advocate in India to ensure that the haves and have-nots, the gaps between haves and have-nots is so much that the poor people and our poverty, we are our range of poverty is so very high. I think Pranav has left it and he has been disconnected. I think so. Okay. No, it's you carry on. Okay. Now we have Ruchi here. Ruchi, would you like to try for a table topic? Sure, man. Sorry, I heard the Sure. voice.
Can you hear me? Yes. Yeah, sure. Bharatji, you are on mute. Hello, am I audible? Yes. Yes. Choose a number between 1 to 10 except 5 and 6. Okay, 7. 7. Have I heard 7? Yeah, let's go for 3. Yes, you have heard 7, but let's go for 3. Okay. Well, importance of Independence Day. Okay. Importance of Independence Day, Toastmaster Ruchin, and would like to say you can use the word, you can use Hindi instead of English as well. As today is a special 75th Independence Day, so you can use English or Hindi, any language. Importance of Independence Day, Toastmaster Ruchi, importance of Independence Day. Okay. So, importance of Independence Day, it has been a long journey, I think, for India. That is for us. It has been a long journey of independence. Everyone knows a fact that in 1947 we got our independence. But that time we were getting independence from uh, the British Raj. That is the independence we got at that point in time. But today we need independence from a lot of things. We need independence from the bad economy that is going on right now. We need an independence from uh, the chaos that is going on in the country, and we need independence from a lot of other things also. Having said that, I think we can only achieve this independence when we unite, when we come together under जैसे कहते हैं कि हर घर एक तिरंगा. So today only, I was in our office. Someone invited me to another office, and they like gave us the flags, and they gave us flags and told us to sort of put the flags up. And like little things like this basically unites us, bring us together, bring us on our on a one group, whether we are from any religion, any caste, doesn't matter, but it gives us the whole feeling of unity. So I think I would conclude by saying that on this Independence Day, let's fight, and let's fight for a better world. Let's fight for a better economy. Yeah. Thank you so much, Toastmaster Ruchi's on your views about Independence Day, and I couldn't agree more as I'm from the business background regarding the economy. Yeah. So, as we're continuing, anyone else would like to speak for? Okay, I can see Toastmaster Yasmin. Toastmaster Yasmin, 3, 5, and 6 has been taken. Choose a number between 1 to 10. 2. 2. Toastmaster Yasmin, speak on Tiranga or a tricolor. Tricolor, Tiranga, Toastmaster Yasmin. Thank you so much. तिरंगे के बारे में जितना भी बोलो कम है. Tricolor, our national flag, it instigates a sense of belonging, a sense of pride in all of us. I always think, what would it feel like when our cricketers go somewhere and they win and they see the flag hosting so high, our Indian flag? In Olympics, the girls, the boys who win medals, they must be so proud of seeing our flags flying high, hosted by people. Not even Indians are standing up for our national anthem and saluting our national flag. As I remember flag as a little girl, when I was a little girl, my dad has a scooter and he just tucked a small flag in his scooter. The next day I saw my maid of my house, she was wiping the floor and the flag was lying there. The next day of Independence Day, I picked up the flag, and that day I realized the importance of Tiranga. Here I can say numerous, endless things regarding the pride of my country, regarding how I'm proud of our tricolor. But let me tell you one thing.
if on 16th August now I see any flag lying here and there and people are walking and stampeding over it, it is just a shame for us. My husband brought a long flag to be hosted on our flat, and I urged him to bring a small tricolor for my little one, just to, host. I'll make her host, and I will make realize her that how a flag is important, not only on 15th August. It should be picked up from street by each one of us. If any one of us is seeing our flag being lying here and there, guys, this is the pride of our country. This is the flag we bow on. We bow in front of it, our flag. This is the flag being hosted when our country reaches a level. This is the flag we all belong to. So I urge every one of you that be proud of being an Indian, be proud of your flag, but please, after 15th August, if you see it lying here and there, please don't throw it anywhere, and please take care of it after that also. Thank you. So much, Toastmaster Yasin, and we'll definitely take care of that, at least in the group. Now, can I add something about tricolor? If you all insist, if you say yes. Yeah, Go ahead. Yes, yes. I would like to say something regarding the emotional values which tricolor has. I would like to add that I have a differences with one of my neighbor. Couple of days back, and was very heated arguments were going on between us. Now he was just sharing the videos and of the tricolor and everything he was sharing, and I was also putting a like on that one. I realized one thing, that even we have so much differences, there is something to be united on, and that is the importance of national flag. Other than what we have learned from the books, that is the importance that each one of us are united in one thing, and that is the tricolor, Tiranga, the flag. And it is a very important thing because it gives a gap of the heated arguments, and there was a gap that yes, this is where we are all equal, which gives us so much strength, so much positivity in all of us. That's what I have found about tricolor just a couple of days back. Now moving ahead, Yasmin would like to say something. You have unmuted your video audio. Hello. Yes. Yeah. Yes, I want to add that, if you are in India also, I'm not talking about going abroad. If I'm coming out of an airport and I'm seeing our national flag being there, I just feel so good. And, every one of us feels so good after seeing our flag anywhere. So I think after 15th August, we'll see our flags in every house, and we'll see a uniqueness, and integrity among every one of us. And I think we will learn more about respecting our country and our beliefs and our heritage and culture. We are born into it. हमको ये सब मिला है, हमको सब कुछ मिला है, अब हमको बनाना है. हमारे देश में जितने भी फौजी अभी नहीं है, उनके बच्चों को अगर हम पढ़ाते हैं, अगर हम टीचर हैं, तो हमें अपना काम अच्छे से करना है. अगर हम अपना काम भी अच्छे से करेंगे तो हम अपने देश की सेवा करेंगे. धन्यवाद. Thank you, Toastmaster Yasmin, for your views. Now we will continue with, I can see guest Neha is here. Yes, Neha, the table topic session is going on. Would you like to try? Toastmaster Bharat, I think that is Toastmaster Pranav itself. Okay. Yeah. Okay, got it. Yeah. Toastmaster Vikas, anyone would like to speak on? No, only if you want, I can give a speech. I'm sorry, my power was, power went off. So so I'm back now. Yeah. It's okay, Toastmaster Pranav. You spoke really well. Great. So, Toastmaster Vikas, would you like to try? Yeah, go ahead. Give me the first topic. Number one. The topic is, how can you contribute to Indian growth? How can you contribute to your country? How can you contribute to your country, Toastmaster Vikas? Definitely. Thank you so much, Toastmaster Bharat, for this topic. How can I contribute to the country? We all can do our bit. There is always a possibility. It is not only about doing the great things that you help poor,
or you make some big monument, something like that. What we do every day, it all contributes. The way you respect people, the way you create an aura around you that everybody is happy, the way you help others, that all matters. That's how you can contribute towards the growth of the country. For instance, if you want to talk about me, मैं कैसे करना चाहता हूँ, तो मैं 3 तरह से अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूं और अपने देश के ग्रोथ में, अपने कंट्री के ग्रोथ में अपना योगदान देना चाहूंगा। पहले तरीके से कि मैं जो भी मेरी कैपेसिटी में है, नीडी लोगों की अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। फॉर एग्जांपल, आई स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन 2 years back called Umeed, where I tried to ignite the rays of health, hope and happiness among people, so that they whenever they are in need, whenever they are hopeless, whenever they need people to support, we are there. So उसमें हमने काफी कुछ किया, लोगों को मोटिवेट किया during COVID times. So that's how I want to contribute. I would like to continue through Umeed. Secondly, through educating people around me. If I know anything, whatever I know, for example, if I know English, I can talk, I can help people learn English. Kids, I want to help learn kids learn English. So whenever I am there, I try to help around people around me, kids, students. मैंने काफी लोगों को बहुत दिनों तक बिना कोई फी लिए कई सालों तक पढ़ाया था, और 10th बोर्ड के एग्जाम्स में मैंने पूरे 20-25 लोगों का बैच बना के व्हेन आई यूज्ड टू बी स्टूडेंट मैंने कंट्रीब्यूट किया था। तो उस तरह से भी हम शिक्षा का दान देके भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और थर्डली, थ्रू मेंटेनिंग the discipline which is required in this country, that is very very important. We can contribute towards the growth of country. कैसे? एक अच्छा साफ सफाई, एक अच्छी क्लीनलीनेस मेंटेन करके, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, सरकारी संस्थानें हैं, उनको किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा के। आपने देखा होगा इन बिटवीन पीपल गो एंड बर्न बसेस, क्या करते हैं वो? that is really really wrong. कोई भी दंगा हो, कुछ भी हो। So I want to ensure that people do not disrupt government properties, and I want to learn and educate about this to most of the people around me. So इस तरह से मैं इंडिया ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच टोस्टमास्टर। Thank you so much, Toastmaster Vikas, for your wonderful views. Toastmaster, you have time? No. 5:30 time. Okay. So I would like to the table topic session is completed. Thank you. I would like to hand over the Toastmaster of the day, Toastmaster Vikas. Thank you so much, Toastmaster Bharat. I really appreciate your efforts. You brought very interesting topic and all of us enjoyed speaking on your topics. आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको एक अच्छा वक्तव्य देने का मौका जो है प्रस्तुत किया, और उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच, रियली रियली गुड। सो आगे बढ़ते हैं, और बिफोर वी बिगिन आवर जनरल इवैल्यूएशन सेशन, समीक्षण जब हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं जो अपनी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बीच लेकर आया था आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के डिस्कशन में, और हम अपने इतिहास के उन पन्नों को एक बार फिर से जाकर देख रहे थे, और उनमें से मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा था आपके लिए। एक तो और फैक्ट्स बचे हैं, जैसे कि आप में से क्या कुछ लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, जो बाउंड्री लाइन है, उसे क्या कहा जाता है? Is anyone knows that? Yes, Mohan, something like that. It's called Mohan line. Radcliffe line. You are partially right. It's called Radcliffe line. ये जो है एक ब्रिटिश बैरिस्टर हुआ करते थे, मिस्टर सर सिरिल रैडक्लिफ। उन्होंने अगस्त 3, 1947, आई एम टॉकिंग अबाउट अगस्त 3, 1947 को मिस्टर रैडक्लिफ decided about that line, and it was then officially published only on August 17, 1947, 2 days after India got the independence from the British. So that's how that Radcliffe line is there, और वहीं पे अभी बाउंड्री लाइन हमारी बनी हुई है कंट्री की। इसके अलावा is anyone aware about why the country is called India? तो Mr. विक्रांत, इंडिया क्यों कहते हैं अपनी कंट्री को? इंडिया मतलब आप भारत बोलना चाहते हैं या फिर इंडिया? इंडिया बताइए, इंडिया क्यों बोलते हैं? क्षमा चाहूंगा, मुझे भारत क्यों बोलते हैं वो पता है, लेकिन इंडिया का मुझे इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम।
कोई बात नहीं है। रुचिर जी बताइए, रुचिर आप बताएं, टोस्ट मास्टर रुचिर, व्हाई वी कॉल इंडिया इंडिया? आज वैसे आज पता नहीं मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो बंद हो गया, बट आई थिंक why it is called India because of the Indus Valley. It has some association with the Indus Valley. Maybe it is associated with Indus Valley civilization as well as the river. I think yes, you are fully correct. It bears the testimony to the great Indus Valley civilization that flourished between the rivers tributaries, and the name India was derived from that river Indus only, right? So thank you so much. Now, to know from you, Toastmaster Ruchir, a bit. Why our country is a great country? Why India is today? Our theme of the meeting was एक भारत श्रेष्ठ भारत. Okay. और मैंने यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से उनका मत जाना कि क्यों हमारा देश श्रेष्ठ है. आप क्या कहना चाहेंगे, टोस्टमास्टर रुचिर? Why our country is great? Why India is a श्रेष्ठ? There are so many reasons which makes us great. You know, one of the reasons that I feel is the diversity of cultures that we have in our country is of one of the, and because of the diversity, how we are able to stick together. That has not been possible into any country. India is the only country which has this unique thing, and this definitely makes our country great. The second is, of course, one of the things that makes us great is our economy. We are also, in terms of, we are definitely, the times are tough and we have a bad economy going on, but still we come into the top 5 economies of the world. So because of our economy is also something which makes us great. So I think these are two reasons for me, at least. India is really a great country. Thank you, Toastmaster Ruchir, for your bombastic thought. Good one. Here comes my next point, the information, something unique which I'm presenting today in front of you. Are any one of you aware, other than India, who all got independence on 15th August 1947? Are there any other countries who share their Independence Day with us? Anyone aware about the fact? I guess Korea. You are right, Toastmaster Ajish. I'll tell you, Korea, Congo, Bahrain, and Liechtenstein. These are 4 countries. All of them share their Independence Day with India on this day. Which all? Korea, Congo, Bahrain, and Liechtenstein. So these are 4 countries. So let's move on with the third and the most important part of today's meeting, जिसे कहते हैं समीक्षण, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है evaluation. So we'll get everything evaluated in this section about our speeches, about roles, about everything whatever happened in the meeting. So इस पार्ट को, इस संघटक को, सभा के इस संघटक को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब इस वर्चुअल स्टेज पर इनवाइट करूंगा जनरल इवैल्यूएटर टोस्टमास्टर विक्रांत को. ओवर टू यू, टोस्टमास्टर विक्रांत. बहुत बहुत धन्यवाद सभा महोदय. अब वक्त आ गया है जनरल इवैल्यूएशन का, पूरे मीटिंग का क्या बोलते हैं, संचयन. अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य भाषण का इवैल्यूएशन. तो उनके लिए हमारी पहली भाषण वक्ता थी टोस्टमास्टर यास्मीन. उनका भाषण का क्या आपने बताया हिंदी में नाम? समीक्षण. उनके भाषण का भाषा समीक्षक करने के लिए मैं उनके भाषा समीक्षक टोस्टमास्टर भरत जी को स्टेज पे इनवाइट करूंगा. ओवर टू यू, टोस्टमास्टर भरत. Thank you, Toastmaster Vikrant. Toastmaster Yasmin. The topic was, level 1 species of liberal arts in times of social media. To start very well, you have been connected us by defining what liberal art is all about. The good things which I think was the knowledge you displayed. Over that, your voice was completely clear. I mean, the way you spoke, everything was clear that I was able to understand. All the audiences were able to understand it very clearly. That was a good one. And hold over the language. You use
certain words, which shows that you have a very good hold over the language, over the grammar, over the vocabulary. You laid the importance of art, which was a good one. You showed the harm effects of social media as well, harm effects of social media on the liberal arts as well. But now, for recommendations and corrections, which I would recommend is that tone of voice. You haven't shown anything that your voice would have been increased or decreased. Reducing the structure, you use the word how, let me tell you. You could have used pitch your voice higher and lower as per the requirement, but you haven't done that one. You ended it abruptly. I mean, we were expecting a conclusion, but there wasn't, I was even able to find a conclusion in your speech. If you have shown the conclusion and how it can be improved, or how you can add on things on all that, it would have been great. Overall, the speech was good. Your level 1 and speech 3 was overall good. But what we expected that when you speak, other than your speech, your emotions are so much clear when you spoke about tricolors other than your speech. But in your speech, you haven't showed the emotions which we would expect. That typically a Yasmin would have said something which would have come out. That's what my recommendation is all about. Overall, the speech was really good. It was informative. It was full of knowledge. And the person like me who is from the background of commerce, it's very hard to understand art, but I was able to grasp it. So best of luck for all the future speeches. Thank you. Over to you, Toastmaster Vikrant. बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हमारे दूसरे भाषण वक्ता टोस्टमास्टर विक्रांत, मतलब मैं, और टोस्टमास्टर विक्रांत की भाषण का समीक्षा करेंगे टोस्टमास्टर विकास। ओवर टू यू टोस्टमास्टर विकास। धन्यवाद टोस्टमास्टर विक्रांत आपका। मैं आपके आपकी जो स्पीच थी, जो आपका वक्तव्य था, जो आपने आज वक्तव्य दिया, उसकी समीक्षा करूंगा। और उसके लिए मैं 3 छोटे छोटे अंश का इस्तेमाल करूंगा जो बनता है आपके नाम से। अर्थात मैं वी से विषय की बात करूंगा, क्र से क्रम की बात करूंगा और अंत से अंत की बात करूंगा। तो आपके इस वक्तव्य का जो समीक्षण मैं करूंगा, वी, क्रम और विषय, क्रम और अंत की बात करूंगा। सो विषय की अगर बात करें तो आपने एक बहुत ही उम्दा विषय लिया, समय का संचालन, समय का संयोजन और समय का समीक्षा कैसे करें, समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि अगर आप समय को वैल्यू देते हैं तो समय आपको वैल्यू देता है। बिल्कुल सही और बहुत ही उचित वक्तव्य कहा जाएगा जो आपने आज की इस सभा के लिए चुनी थी। तो सबसे पहले आपको बधाई, आपकी स्पीच की समाप्ति पर आपने बहुत ही अच्छी उम्दा भाषण प्रस्तुत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय बहुत ही अच्छा था। अब आते हैं क्रम पे। क्रम अर्थात आपने कहाँ से शुरुआत की, आपके मध्यम जो पूरी स्पीच, जो पूरी भाषण थी, उसके बीच में आपके जो अंश थे उनका कैसा रोल रहा और अंत में आपने अंत कैसा किया। तो मेरे हिसाब से आपकी शुरुआत, आपका मध्यम स्तर और आपका अंत बहुत ही अच्छा रहा। सो आपने क्रम को बहुत अच्छे से फॉलो किया। आपने हिंदी में बहुत ही अच्छे कोट्स और उदाहरण के साथ आपने अपने संभाषण की शुरुआत की और उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आपने जिस इलैबोरेटिव तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से सारे रोल प्लेयर्स कितना टाइम लेते हैं और लेनी चाहिए उसकी जानकारी दी और कैसे हर एक व्यक्ति इस पूरी सभा में अपने समय का संयोजन कर सकता है, उसके बारे में आपने बताया। तो आपने बहुत अच्छा किया। और अंत की अगर बात करें तो आपका अंत भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बाइलिंगुअल मीटिंग होने के कारण, बाइलिंगुअल सभा होने के कारण आपने अंत में भी काफी कुछ कोट्स देकर बहुत ही अच्छे और सकारात्मक तरीके से आपने अपने संभाषण का अंत किया। तो विक्रांत जी, आपने वी, विषय, क्रम और अंत तीनों ही स्तर पर आपने बहुत ही अच्छी का प्रस्तुतिकरण किया। परंतु आपकी संभाषण में मैं एक छोटी सी खामी निकाल पाया और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि आज आप अपने क्लब के मेंबर्स के रोल्स और उनकी टाइम एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको सुझाव मैं यह दूंगा, ऑलवेज यूज पॉजिटिविटी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लब
and there are people presenting the roles. You told that people take a lot of time and meeting get extended, what the guest will think. तो इस तरह की संभावनाओं को अगर आप चाहें तो इनको भी आप सकारात्मक तरीके से बोल सकते हैं, ताकि सारे सभा में उपस्थित जो हमारे मित्र हैं, जो मेंबर्स हैं, दे फील मोटिवेटेड. अदर देन दिस देयर वाज नथिंग एल्स. यू डिड रियली गिव जस्टिस टू द स्पीच. सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके संभाषण के प्रस्तुतिकरण के लिए. थैंक यू सो मच टोस्ट मास्टर विक्रांत. बहुत बहुत धन्यवाद और अपने सुझाव के लिए टोस्ट मास्टर विकास, मैं इन पर जरूर से गौर करूंगा. अब चलते हैं आगे. हमारी टैग टीम टाइमर, गणना, काउंटर और ग्रामर. तो सबसे पहले शुरुआत पिछले क्रम से करते हैं व्याकरण विशेषज्ञ से. इनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा टोस्ट मास्टर अजीज को. टोस्ट मास्टर अजीज, ये मंच आपका है. Thank you, Toastmaster Vikrant. So here is my grammar report. Word of the day, boomdelicious, meaning someone or something is really amazing or wonderful, has been used by me, Bikash 2 times, and Toastmaster Bharat. And our phrase of the day, in the soup, that means in trouble or in danger, has been used by Toastmaster Bharat and myself. And with respect to good usage of English, I would list down a few of them. Liberal arts, backseat, downsizing, compounded, in the light of wisdom, imparted, heated argument. And I also like to mention some of the good usage of Hindi, like Samay Sarvashreshth, Safa Mahodaya, Sword of Swaraj, Shisha Ka Daan. Okay, and I would also like to mention few of the not so good usage of English. And I noticed that there were in many places the usage of an has been mixed with the vowels A, E, I, O, U. Please take care of that. Whenever we use vowel, please use an. And I also noted a not so usage of to become developed countries. Instead of that, it would have been better to use to become a developed country. That's it from my side. Thank you, all of you. Over to you, Toastmaster Vikrant. बहुत अच्छा टोस्ट मास्टर अजीज. अब चलते हैं गणना विशेषज्ञ टोस्ट मास्टर यास्मीन. टोस्ट मास्टर यास्मीन, आप अपना गणना रिपोर्ट रजूआत करें, प्रस्तुत करें. Thank you, Toastmaster Vikrant. So, I would start with the president. Toastmaster Vikrant has used "a" for 2 times. Toastmaster Bharat used "a" for 1 time. Toastmaster Ajish used "a" for 4 times, 1 and 1 short pause. Toastmaster Pranav used 3 R's and 1 short pause. Toastmaster Vikas used only 1 "a" and was flawless. Toastmaster Yasmin used 2 R's, 2 long pauses and 2 short pauses. Toastmaster Ruchi used 1 "a" and 2 and was flawless. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद गणना विशेषज्ञ. अभी एज अ टाइमर मैं अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं. सबसे पहले शुरुआत करते हैं साजडेड आर्म से. उन्होंने 2 मिनट 40 सेकंड का समय लिया. उनके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट मतलब मैं टोस्ट मास्टर विक्रांत, मैंने 6 मिनट तक बोला. हमारे टोस्ट मास्टर ऑफ द डे टोस्ट मास्टर का सभा महोदय, उन्होंने अपना पूरी सभा मिलाकर कुछ 22 मिनट और 20 सेकंड का समय लिया है. इनके बाद चलते हैं तैयार भाषण में. पहली वक्ता थी टोस्ट मास्टर यास्मीन, उन्होंने भाषण रहा एग्जैक्ट 6 मिनट. फिर दूसरे भाषण वक्ता टोस्ट मास्टर विक्रांत यानी मैं, मेरा भाषण रहा 7 मिनट और 5 सेकंड.
और जाते हैं भाषण समीक्षक नंबर 1 टोस्ट मास्टर भरत। उन्होंने पहले और रिपोर्ट देने के टाइम में टोटल उनका समय है 2 मिनट 55 सेकंड। दूसरे भाषण समीक्षक है टोस्ट मास्टर विकास, और पहले ऑब्जेक्टिव देते हुए और बाद में रिपोर्ट देते हुए टोटल मिला के टाइम हुआ 3 मिनट और 30 सेकंड। अब चलते हैं टेबल टॉपिक मास्टर त्वरित भाषण महोदय टोस्ट मास्टर भरत। उन्होंने टोटल टाइम लिया है 3 मिनट 20 सेकंड। अभी तैयार त्वरित भाषण करता नंबर 1 टोस्ट मास्टर अजीज 1 मिनट और 30 सेकंड। त्वरित भाषण वक्ता 2 टोस्ट मास्टर प्रणव एक्स टोस्ट मास्टर और 1 मिनट और 40 सेकंड। तीसरे त्वरित भाषण वक्ता टोस्ट मास्टर रुचिर, उन्होंने टाइम लिया है 1 मिनट 50 सेकंड। और 4 नंबर के त्वरित भाषण करता है टोस्ट मास्टर यास्मीन, उनका टाइम है 1 मिनट और 40 सेकंड। और 5वें नंबर के त्वरित भाषण करता टोस्ट मास्टर विकास, उन्होंने टाइम लिया है 2 मिनट 27 सेकंड। अभी चलते हैं टैग टीम पे। तो ग्रामेरियन पहले और बाद में जब रिपोर्ट तीनों का मिला के उनका टोटल टाइमिंग होता है 3 मिनट। अगणना विशेषज्ञ का टोटल टाइमिंग है पहले और बाद मिला के 1 मिनट और 50 सेकंड। और टाइमर मैंने पहले टाइम लिया था 1 मिनट 30 सेकंड और अभी का मेरा टाइम दोनों मिला के होता है 3 मिनट और 30 सेकंड। तो ये था मेरा टैग टीम का रिपोर्ट। अभी आते हैं मेरे खुद का जनरल इवैल्यूएटर रिपोर्ट। तो सभा शुरू हुई थी 4 बजे और 10 मिनट, क्योंकि कुछ रोल प्लेयर मिसिंग थे। तो कुडोस टू ऑल कि सब लोगों ने दो मल्टीटास्किंग आज किया है इंडिपेंडेंस डे के दौरान। तो मतलब आपने अपना कीमती वक्त देके इस सभा को सफल बनाया है। करते हैं सादरे नाम। उन्होंने क्लब का मिशन बहुत सही तरीके से सबके सामने प्रस्तुत किया। उसमें बाद में आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब प्रेसिडेंट ने टोस्ट मास्टर की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से समझाया और ये हर हफ्ते हर सप्ताह को बार बार दोहराने की क्या जरूरत है, ताकि सभी सदस्यों को पता चले कि टोस्ट मास्टर क्या है। हम अभी भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को टोस्ट मास्टर की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं थी, लेकिन ये बार बार करने से हमारे दिमाग में ये जाता है कि ये टोस्ट मास्टर क्या फ्रेटर्निटी मतलब पूरा विश्व में किस तरह से ये फैला हुआ है। उनके बाद चलते हैं टोस्ट मास्टर ऑफ द डे मतलब सभा महोदय टोस्ट मास्टर विकास। जैसे ही 15 अगस्त नजदीक आ रही है और 13 अगस्त है, तो बिल्कुल उनके रिलेटेड आज उन्होंने थीम रखा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सभी लोगों के साथ जुड़ के सभी लोगों से सवाल जवाब करके सभी को अपने साथ जुड़ के भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत क्यों है, वो थीम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से सभा संचालन किया और बहुत सारी रिसर्च करके भी आए। ऐसा नहीं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का है, बहुत सारा टेक अवे है कि जो हम नहीं जानते। बहुत सारी चीज मैंने नोट डाउन किए कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ था, नेशनल फ्लैग कब किसने कैसे डिजाइन किया था, और फिर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन रेड क्लिफ लाइन क्यों और किसके नाम से हुई। तो ये सब बहुत रिसर्च करने के बाद, ये सब नोट डाउन करने के बाद उन्होंने ये थीम लेके ये आए हैं। ऐसा नहीं कि बस एक भारत श्रेष्ठ भारत तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज हम नहीं जानते थे, वो हमें आज जानने को मिला है। और इंडिया का नाम ये भी मैं भूल गया, मुझे भारत का नाम पता था कि भारत ये जो कौरव और पांडवों के भी परदादा से भारत उनके नाम से भारत पड़ा है, लेकिन ये इंडिया मैं भूल गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो ये भी आज रिपीट हुआ। फिर हमारा 15 अगस्त के साथ और कई देशों का भी इंडिपेंडेंस डे आता है, वो भी जानने
मतलब ये कुछ नई चीजें उन्होंने लेके आए हैं, तो बहुत सभा में थोड़ा सा बोलते हैं कि बहुत मजा आया। तो ये मजा मतलब वो आपका अनुभव पिछले 6 से 7 सालों का ये बताता है कि किस तरह से सभा को अच्छी तरह से सफल बनाया जाए, और वो काम आपने करके दिखाया है। और जैसे समय संबंध टाइम मैनेजमेंट, हाँ कि बहुत कम मेंबर थे, लेकिन आपने अपना टीएमओडी का समय थोड़ा ज्यादा किया, लेकिन आशा रखता हूँ कि ये अपना जो 22 मिनट के अंदर वो पूरा खत्म कर दिए। बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं तैयार भाषण स्पीकर 1 टोस्टमास्टर यास्मीन। कांग्रेचुलेशन, आपको धन्यवाद कि आपने L1 S3 का स्पीच आज कंप्लीट किया है। वो उनके समीक्ष टोस्टमास्टर भरत बहुत अच्छा CRC अप्रोच से उनका समीक्षा किया। स्पीकर नंबर 2 टोस्टमास्टर विक्रांत, मैंने भी मेरा L2 S1 का स्पीच जो ऑब्जेक्टिव था, उनका पर्पस क्या तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और मैंने क्लब के टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कैसे काम किया जाए उनके ऊपर भाषण दिया। और मेरा भाषण का समीक्षा बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टोस्टमास्टर विकास और आज की टीएमओडी बहुत अच्छा इवैल्यूएशन किया, और रिकमेंडेशन भी बहुत अच्छा किया। दैट आई विल नोट डाउन कर दिया है। अभी चलते हैं टेबल टॉपिक त्वरित भाषण समीक्षा त्वरित भाषण। तो अभी टेबल टॉपिक मास्टर के ऊपर टोस्टमास्टर भरत टेबल टॉपिक के जो नियम और कैसे ही वर्ड ऑफ द डे और फ्रेज ऑफ द डे यूज करना है, वो नियम को ठीक तरह से समझाते हुए, और भारत के ऊपर इंडिपेंडेंस के रिलेटेड भारत की ये इकोनॉमी के ऊपर कुछ प्रश्न लेकर आके, मतलब सभा का थी और आपका भी जो टेबल टॉपिक के जो प्रश्नार्थ थे वो आज बहुत एक दूसरे में बहुत मिलाप है। तो ये बहुत अच्छा आपने किया, और सभी त्वरित भाषण कर्ताओं ने अपने प्रश्नों का बहुत सही तरह से जवाब दिया। तो ये था मेरा आज का जनरल रिपोर्ट। तो इसी के साथ मैं सभा महोदय को मंच वापस करता हूँ। ओवर टू यू टोस्टमास्टर विकास। Thank you, Toastmaster Vikrant, for that detailed evaluation of each and every role and each and every part of the meeting. So आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा मैं। जो अपना इंडियन नेशनल सॉन्ग है जिसका नाम है वंदे मातरम, आप सभी को पता होगा कि उसके जो रचयिता हैं वो थे मिस्टर बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उनकी एक नोवेल है आनंद मठ के नाम से उन्होंने लिखी थी 1880s में, और उसी 1880s में लिखी गई जो उनकी आनंद मठ के नाम से जो उनकी नोवेल है, उससे ही वंदे मातरम जो है अडॉप्ट किया गया है, और इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। तो ये था हमारे नेशनल सॉन्ग के बारे में। आपने नेशनल एंथम के बारे में जाना, नेशनल सॉन्ग के बारे में जाना, और इस तरह से हमारी आज़ादी जो हमें मिली, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है हमारा तिरंगा फहराया था रेड फोर्ट पे, लाल किले पे 15 अगस्त के दिन। और उनकी पहली जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, उन्होंने कहा था बहुत सालों पहले हमने यह स्वप्न देखा था कि एक ऐसा समय आएगा जब हम लोग अपने इस प्रतिबद्धता को तिरंगे के प्रति साकार करेंगे। और आज की 12 बजे की रात से जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तो हम जो है इंडिया अपनी जिंदगी को एक नई आयाम पर ले जाएगा, एंड वी विल अवेक टू द लाइफ एंड फ्रीडम। अपनी स्वतंत्रता और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम जगेंगे, ताकि हम 15 अगस्त को हम जब जगे थे। तो इस तरह से उनका ये पहला स्पीच था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। सो हमारा भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में द वे वी हैव डेवलप्ड, द वे वी हैव फ्लरिश्ड, हमने चांद पर तिरंगा लहरा दिया और अब हम मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं। हमने इतने सारे सैटेलाइट्स और उपग्रह छोड़े हैं जो सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारे 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 देश के बुलंदियों को बयां करती है बात। यह बात जो है, जिस तरह का हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इतनी विविधता के बावजूद जो हमारी एकता है, यह हमें श्रेष्ठ बनाती है। हमारे देश में
जो ये टेक्नोलॉजी है, जो जो हमारे इंजीनियर्स हमेशा कुछ नया नया रिसर्च करते रहते हैं और जिससे हम पूरे विश्व को आज टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, चाहे वो गूगल जैसी कंपनियां हो या सिटी बैंक हो, हर जगह पर ऊंचे पदों पर बैठे हुए जो एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भारत से आते हैं और यह हमारे देश को श्रेष्ठ बनाती है। बहुत सारे कंट्री के बड़े बड़े राजनेता और राजनयिक के पदों पर विराजमान होते जा रहे हैं हमारे भारत के नेता। अभी हाल ही में भारतीय मूल के एक नेता को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो यह बताता है कि भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र है। जिस तरह का हमारा वेदों का, हमारा उपनिषदों का इतिहास रहा है, जिस तरह से एक समय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था भारत, एक एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जहां दूर दूर के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, यह बात हमारे देश को श्रेष्ठ बनाती है। और इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं कि हमारा भारत श्रेष्ठ था, हमारा भारत श्रेष्ठ है और हमारा भारत श्रेष्ठ रहेगा। आइए हम सब एक प्लेज लें और एक भारत के रूप में कार्य करें और कहें, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। सो टोस्ट मास्टर विक्रांत, मेरा यह सजेशन रहेगा, मेरा सुझाव रहेगा कि चूंकि आज की सभा में 4-5 ही हमारे मित्र थे जिन्होंने बहुत सारे रोल लिए और सब ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है इस मीटिंग के लिए, तो सभी को विनर घोषित करते हुए आप इस सभा का समापन करें। हाँ, और हमें वो बेस्ट स्पीकर वो सब करना नहीं है क्योंकि बहुत उसमें, ठीक है। तो बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर विकास। और रिव्यू लेना है कि या ओके, वी हैव 5 ओनली। तो इसके साथ ही हाँ हाँ, आप पूछ सकते हैं किसी से जी। चलिए, तो मैं आप मेंबर्स को पूछना चाहता हूँ कि आपको आज की सभा कम सदस्य होने के बावजूद भी कैसी लगी? टोस्ट मास्टर यास्मीन, आपको भाषण देना कैसा लगा, बताइए। थैंक यू टोस्ट मास्टर विक्रांत। मुझे भाषण देना अच्छा लगा, हालांकि मैं बहुत कुछ भूल गई थी, बट आई थिंक आई नो कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, मुझे कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुनते ही रह गई आपका भाषण, बहुत कुछ सीखने को मिला। कम सदस्य थे पर मीटिंग की थीम इतनी अच्छी थी कि हम सब इस मीटिंग में बंधे रहे और जो भी हमें फैक्ट्स पता चले और जो भी हमने बातें की, आज हम सब ने अपने व्यूज शेयर किए। तो इम्प्रॉम्प्टू होने के बावजूद हम सब ने बोला, शुरू से आखिरी तक हर कोई अपने व्यूज दे रहा था और ये मीटिंग काफी अच्छी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंस डे की जो थीम है और ऐसी थीम्स की मीटिंग जिसमें बाइलिंगुअल मीटिंग्स भी जैसी होती हैं, काफी सफल होती हैं और सबने बहुत अच्छा बोला, सबके दिल से आज बातें निकली, किसी को भी अटकना नहीं पड़ा इम्प्रॉम्प्टू में। सो बहुत अच्छी मीटिंग थी, धन्यवाद। अच्छा, मैं एज ए आप मेरे मेंटी है तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ अपनी स्पीच के लिए कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है कि इट इज गुड कि हम ऑनलाइन जब स्पीच देते हैं तो हम नोट्स को पढ़ते हैं कभी कभी, लेकिन एक आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, मतलब आप स्पीच कॉन्टेस्ट या में, तो आपको स्टेज पे जाके बोलना होगा। तो आप आपने जो भाषण तैयार किया है उनको मिरर के सामने 5-6 बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए विदाउट आप भूल जाए तो पढ़ो, लेकिन जब आप भाषण दे रहे हो तब मेरा ये सुझाव है कि आप वो नोट को मत देखो, मतलब वो हैबिट पड़ जाएगी। मतलब ये ऑनलाइन स्पीच देने में लेवल में चलता है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं भी जाते हो, ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हो, तब आपको यू हैव टू प्रिपेयर एट दैट लेवल। तो मेरा एज ए मेंटर आपको ये सुझाव था कि मैं ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी से करता हूँ कि व्हाट माय अदर मेंबर्स इज आल्सो व्हाट डूइंग, ठीक है। और कुछ टोस्ट मास्टर अजीज, भरत? Okay, कैसी लगी? it was one delicious meeting. Obviously, the topic was really nice. So even though numbers were very less, so but the content was super and bombastic. So we got really like into it, deep into it. So it is like emotional connection with always with our nation. So that's it was wonderful always. Okay, to talk about our country and the rich heritage and the specialities of our country, the characteristics. Always wonderful to talk about that. Always.
Okay. Thank you. Thank you. Well, thank you very much. Toastmaster Bharat, you want to add something? I think he's Toastmaster Vikas, our experienced Toastmaster. आप कुछ कहिए हमारे एरिया सो कुछ नहीं, बहुत ही मजेदार रही सभा। बस थोड़े से हमारे कुछ मित्र कम आए, तो सभा का जो है मीटिंग का प्रमोशंस थोड़ा सा और अगर हम करते तो ज्यादा मजा आता। बट ये है कि जितने भी लोग थे उन लोगों ने अपना होल हार्टेड सपोर्ट दिया इस मीटिंग को, और सबकी जो मतलब जो पूरी दिल से जो इस सभा में सबका साथ था, उसकी वजह से यह मीटिंग मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रही, और हम सब ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है इस मीटिंग में। बहुत मजा आया। भरत भाई, आपको क्या कहना है, कहिए। सॉरी, मैं कुछ मिस कर गया, मैं एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर गया था ड्यू टू माय क्लाइंट। कोई बात नहीं, आपके फीडबैक पूछ रहे थे कि क्या आपको लगा, कैसा लगा मीटिंग आपको भरत भाई? बहुत बढ़िया लगा। पीपल ऑल ऑफ अस स्पोक रियली वेल, और मीटिंग की कंडक्ट की गई, और मीटिंग में जिस रोल्स को एक्स्ट्रा रोल्स हम लोगों ने सबने लिए हैं टू मेक द मीटिंग हैपन इन अ प्रॉपर वे इज रियली गुड थिंग, बिकॉज इज नॉट नेसेसरी कि हर बार नंबर ऑफ 20 पीपल या 30 पीपल हम लोग ज्वाइन हो पाए, बट स्टिल वी मैनेज दैट 2 hours we will dedicate to this club is a great thing. That is the spirit of Toastmasters. ज्यादा मजा आएगा, बट स्टिल बहुत अच्छा रहा अपना ये सब। Great. So that's the spirit of Toastmasters. We thoroughly enjoyed it. मुझे ऐड करना है कि टोस्टमास्टर विकास ने मुझे स्पीच, मेरी तैयारी थी, मैंने वो कैंसिल भी कर दिया था, मैंने जी लिया, मैंने टाइमर किया, फिर भी मुझे स्पीच देने का मौका दिया, क्योंकि अभी देखो, अभी 4:10 को स्टार्ट हुआ था, अभी 6:10 नहीं हुए, तो अभी भी 7 मिनट बाकी है 2 घंटे में। तो हमने बहुत अच्छी तरह से मैच किया, और थैंक यू कि मेरा आज स्पीच L2 S1 खत्म हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंजॉय।